हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से नीट 2020 एंड नीट 2023 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स will be 0, pi, 3 pi by 2 and pi by 2. For central maxima, path difference is equal to 0. Phase difference two pi by lambda into path difference 2 pi by lambda into 0 is equal to 0. The phase difference will be 0. A is correct option. Next, assume that light of wavelength 6000 nanometer is coming from star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is 1.3 into 10 to the power minus 7 radian, 7.32 into 10 to the power minus 7 radian, 6 into 10 to the power minus 7 radian, 3.66 into 10 to the power minus 7 radian. जो रिजोल्यूशन होता है RP of telescope is D. D is diameter of objective 1.2 to lambda. This RP is equal to 1 by d theta. D theta is angular limit of resolution. So d theta will be 1.22 lambda by d. Lambda 1.22 into lambda. Lambda is given as 6000 nanometer या 600 nanometer और 600 into 10 to the power minus 9 meter divided by 2. 300 1.22 into 300 into 10 to the power minus 9 और 1.22 into 3 into 10 to the power minus 7 और 3.66 into 10 to the power minus 7 radian. So limit of resolution will be 3.66 into 10 to the power minus 7 radian. This D is correct option. Next, the Brewster's angle IB for an interface should be 30 degree, less than 30 degree or greater than 30 degree and less than 45 degree, 45 degree and 90 degree. Between 45 and 90, IB is 90 degree. ये IB is between 0 and 30 degree. जो म्यू की वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू theoretically this may be between 1 and infinite. When mu is equal to 1, जो ब्रूस्टर्स लॉ कहता है उसके अनुसार म्यू इज इक्वल टू tan I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, I is equal to tan inverse mu. तो tan inverse minus 1, tan inverse 1, tan inverse 1 is 45 degree. When
म्यू इज इन्फिनाइट, तो आई की वैल्यू होगी tan इनवर्स इन्फिनाइट, tan इनवर्स इन्फिनाइट इज 90 डिग्री। तो जो आई बी की वैल्यू होगी, दिस इज आई बी की वैल्यू होगी वो 45 एंड 90 डिग्री के बीच में होगी। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, for Young's double slit experiment, two statements are given below. Statement number 1, if a screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes remains constant. If the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases. Both statements first and second are false. Statement first is true, but statement second is false. Statement first is false, but statement second is true. Both statements are both statement first and statement second are true. जो फ्रिंज विड्थ होती है इन बीटा इज इक्वल टू d lambda by d. D is distance between the screen and slit, capital D, and d is distance between the slits. तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी बीटा बाई डी और लैम्डा बाई डी। तो थीटा डिपेंड्स ऑन लैम्डा एंड डी. डी इज डिस्टेंस बिटवीन द slits and lambda is wavelength of the light. First statement, if the screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes remains constant. तो जो एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द screen, hence this statement is correct. Second statement, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, इनिशियली मान लिया थीटा 1 एंगुलर विड्थ है तो लैम्डा वेवलेंथ है तो लैम्डा बाई टी। सेकेंड केस में थीटा 2 लैम्डा 1 अगर वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा 1 बाई डी। तो एंगुलर सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हम लार्जर वेवलेंथ यूज करेंगे तो एंगुलर सेपरेशन विल बी लार्जर, लेकिन यहाँ डिक्रीजेज लिखा है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट फर्स्ट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट फर्स्ट is true but statement second is false.